हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वियर्डली वायर्ड पे। सो एज प्रॉमिस्ड, टुडे वी विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ऑन द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ JEE Mains 24th February 2021 morning shift. So before starting, let me introduce you to myself. My name is Krish Agarwal. I am a first year undergraduate at the Indian Institute of Technology Kharagpur from the Department of Ocean Engineering and Naval Architecture. So these are my ranks which I have obtained in different examinations. So without wasting much time, let's start with our topic. So पहला क्वेश्चन है, one of the diameter of the circle x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0 is a chord of another circle C. So center is at 2, then its radius is. So we have a circle. ठीक है, जिसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो दूसरे सर्कल का, कोई दूसरा सर्कल सी का कॉर्ड है। ठीक है, और इसका सेंटर दिया हुआ 2, ठीक है, और इस वाली सर्कल के इक्वेशन भी हैव एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसका सेंटर निकाल सकते हैं सर्कल का फ्रॉम दिस इक्वेशन विच इज माइनस g माइनस f। तो g is the coefficient of x by 2, ठीक है, so that is 1 over here, and f is a coefficient of y by 2 which is 3, sorry, x is the coefficient of 2x and y is the coefficient of 2y and f is a coefficient of 2y, so here it is 3, so the center is 1, 3 over here। okay, तो हम लोग को रेडियस निकालना है ऑफ द सर्कल C। तो ये जो C वाला जो सर्कल है, इसका हम लोग को रेडियस निकालना है। तो इस दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो we know center center of circle bisects the chord at bisects the chord। तो यहाँ पे इस chord पे, इस सर्कल के इस chord पे ये और ये तो इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है। तो ये जो मिड पॉइंट पे हम लोग को सेंटर से ज्वाइन किए, तो दिस शुड बी परपेंडिकुलर, क्योंकि सेंटर से कोई भी chord पे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर उसको बाइसेक्ट करा तो दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। ठीक है, तो वी गेट दिस और फिर इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ठीक है, तो वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर and similarly we can join it from here as well। okay, तो ये वाला रेडियस, ये वाला लेंथ हम निकाल सकते हैं। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस रेड सर्कल। तो इसका रेडियस क्या होगा, r is equals to root over of g square plus f square minus c। c is 6 here, it is a constant coefficient, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, g square is 1 minus 1 whole square is 1 and f is minus 3 का whole square is 9, 10 minus 6, so we get it as 10 minus 6 is 4 which is 2। ठीक है, so this radius is 2 and we can find out this distance using distance formula। तो distance form इसको d मान लेते हैं distance, तो d is equals to root over of 2 minus 1 का whole square plus 1 minus 3 whole square। उससे आया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर which is 4, it's 1 plus 4 root 5। ठीक है, अब ये हम लोग के पास डिस्टेंस रूट 5 आ गया, d इक्वल्स टू रूट 5। अब हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो इससे हम लोग को ये कैपिटल R C का रेडियस मिल जाएगा।
r square is equals to d square plus small r square. ठीक है, so this is r is equals to root over of d square is our root 5 also, which is 5, plus r square is 2 का square, which is 4. So 9, root 9 is 3. So the correct answer to this question is 3. Moving on to the next question. The minimum value of alpha for which the equation is equals to alpha has at least one solution. तो ये काफी स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो और फिर उसको उसका वेवी कर्व बना के हम लोग उसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे किस पॉइंट पे आ रहा है, तो वहां से हम लोग को अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट द फंक्शन fx as 4 by sin x plus 1 by 1 minus sin x. ठीक है, माइनस अल्फा. ठीक है, ये पूरा इसको फंक्शन ऐसे फंक्शन ट्रीट करें. अब इसका डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा हम लोग को. अच्छा, बिफोर दैट विल बी बेटर इफ यू सब्स्टिट्यूट sin x as some constant, let's say t. ठीक है, तो कैलकुलेशन मतलब बहुत हम लोग को अवॉइड करेगा, तो यहाँ पे अननेसेसरी कैलकुलेशंस. तो अगर sin x इक्वल टू t है और sin x का जो रेंज है 0 to π/2 पे लाई करता है, sin x लाई बिटवीन 0 to π/2, सॉरी x लाइज बिटवीन 0 to π/2, तो हम लोग को sin x अगर यहाँ पे लगाते हैं तो हम लोग को we get is lying between 0 to 1. So therefore we get the range of t as 0 to 1. अब इसको डिफरेंशिएट करें, पहले इसको लिख लेते हैं as 4 times t plus 1 by 1 minus t minus alpha. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे f dash t is equals to minus 4 by t square plus 1 by 1 minus t whole square. ठीक है, ये कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, तो and equated to 0, so we have it equated to 0 अभी, so we have it as t square minus 4 times 1 minus t whole square divided by t square times 1 minus t whole square. So this was equals to t square minus 4 plus 4t square. Let's not take it this way, we can do it and this way also. 2 times 1 minus t whole square by t square minus t square. Now this a square minus b square, we can write it as t minus 2 times 1 minus t into t plus 2 into 1 minus t divided by t square 1 minus t square. Now we have a f dash t as t is 3t minus 2 into this is 2 minus t divided by t square into 1 minus t whole square. We have our f dash t. अब इसका वेवी कर्व बना लेते हैं. नंबर लाइन इसका
क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा? पहला इज 2/3, दूसरा इज 2, तीसरा इज 1, चौथा इज 0। ठीक है, सो वी हैव आवर पॉइंट्स। अब चेक करना कि फॉर t इक्वल्स t लेस देन 0, अगर इसको माइनस मान लेते -1 पे ये -3 -5 ये नेगेटिव, -1 पे ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, ये -1 पे हम, हाँ ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसका टोटल साइन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपना नेगेटिव आएगा। अब नेक्स्ट है 0 to 2/3 पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग को क्या रहेगा, लाइक कोई एक पॉइंट लेते हैं 2/3 0.67 समथिंग, तो 0.5 हाफ, तो अगर हाफ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट इज 1.5, 1.5 is negative, half is positive, these two are always positive, तो इसमें भी साइन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट सब्स्टिट्यूट मान लीजिए, टेक इट 0.75। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 0.75 into 3 is 2.25, this is positive, this is also positive, तो यहाँ पे साइन हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और इधर में देखा जाए 1 से 2 के बीच 1.5 ले लो, दिस पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो कुछ हमारा कर्व ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे जाके मतलब साइन चेंज करेगा, and that is also negative to positive, so 2/3 will be a minima of this, so from here we get t minimum is equal to 2/3, हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिल गया 2/3 and that is also lying in the range। okay, so next our point of concern is to find the value of alpha। ठीक है, तो अब इसको यहाँ इस वाले इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अल्फा मिल जाएगा हम लोग को। Actually, we have done a mistake. This should not be minus alpha because alpha is the solution of this function। ठीक है, तो अगर इसको fx लेंगे तो अगर इसमें अगर हम t का वैल्यू लाइक सब्स्टिट्यूट करते हैं तो that will give us the value alpha, तो that should, और इस केस को कैलकुलेशन चेंजेस आएगा नहीं कि alpha was a constant, so now substituting f of t as f of 2/3 and then we get 4/2/3 plus 1/1 minus 2/3, which is 4/2/3 is 2 into 6 plus, and this is 1/3, 3, so our answer is 9। ठीक है, so this we are moving on to the next question, question 23। Let three vectors a, b and c be such that c is coplanar with a and b, and we have a dot c is equal to 7 and b is perpendicular to c, where we get given with the values of the vectors a and b, then the value, and then we have to find this one। So we have three vectors a, b and c, so first condition c is coplanar with a and b, तो अगर एक वेक्टर b लेते इधर
एक वेक्टर ए लेते हैं, ये 2D प्लेन में बना हुआ, ठीक है। सो वी हैव अनदर वेक्टर सी इन द सेम प्लेन, कोप्लेनर मीन्स दे आर इन द सेम प्लेन। अब तो वी कैन राइट सी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड, ठीक है। तो कोप्लेनर के लिए हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं, which is C can be written as P cross A cross B times lambda, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखा, तो देख सकते हैं हम लोग, जैसे B cross A, it is a vector perpendicular to this vector, perpendicular to this plane, like coming out towards you. So B cross A will be a vector going inside, across, into the paper, ठीक है। अंदर जाता है एक वेक्टर B cross A, ठीक है, which is perpendicular to this plane। अब इसको भी हम लोग क्रॉस करें B के साथ, ठीक है, तो that should be a vector in the plane of this A and B, ठीक है। तो कुछ ऐसा वेक्टर आना चाहिए इस साइड या कुछ इधर उधर, तो we can write C in this way, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, A डॉट C और B परपेंडिकुलर टू C, तो B परपेंडिकुलर C का क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि B डॉट C इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिखना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, B क्रॉस C क्रॉस make simpler calculations. So we can write this equation as B dot A times vector B minus B dot B times vector A। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम लोग का ये फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखते हैं, तो वी गेट। अच्छा, हम लोग लैम्डा क्यों लिए, लैम्डा इसलिए लेंगे कि वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सो लैम्डा लेना पड़ेगा। बी डॉट ए वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, तो बी डॉट ए हम लोग क्या आ रहा है, आई और एक्चुअली 2i प्लस के, ठीक है। तो वी हैव -1 into 2 which is -2 एंड प्लस जे कैप का यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं तो 0 हो गया, के कैप के लिए 1 into +1 which is -1, ओके। अब we have a this one is -1 times vector b minus b dot b का मतलब mod b का होल स्क्वायर, which is इसका जो mod होगा which is root over of 2 square plus 1 which is √5, ठीक है। तो mod b square is 5 times vector a। अब इसको लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स माइनस b वेक्टर इज -2i कैप minus k कैप minus 5 times vector a is plus 5i cap minus 5j cap minus 5k cap, ठीक है। So we have vector c as lambda times 3i cap minus 5j cap minus 6k cap, ओके। अब मतलब कंडीशंस का यूज करने का टाइम आ गया, लाइक वी हैव a dot c r as 7, so a dot c is equal to 7,
Vector A is minus I plus J plus K, and we have this C as this. A dot C is 3 lambda minus 5 lambda. Sorry, this is minus 3 lambda. Okay, minus I. Minus 5 lambda minus 6 lambda is equals to 7. So we get a lambda as minus 8 minus 14. So minus 14 lambda equals to 7. So lambda is minus half. So vector C is minus half times minus under nothing. We have 5 minus 3 I cap plus 5 J cap plus 6 K cap. This is our vector C. We are also having an equation B dot C. Actually, we don't need any more equation. We can directly just find out the value of 2 times A plus B plus C vector. A plus B plus C क्या होगा हम लोग का? A is minus I plus J plus K. B is 2I, yeah, 2I plus K. And C is minus 3 by 2I, yeah, plus 5 by 2 K plus 6 by 2, which is 3K, yeah, the whole square. So this is 1 minus half I cap. J is 7 by 2 and K is 5 K cap per square. ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या हो गया? The square is 2 times 1 minus 1 by 2 whole square is 1 by 4 plus 49 by 4 plus 25. Okay. We have it as 2 times 50 by 4, which is 25. 4 is 25 by 2 plus 25, which is 75 by 2. 25 by 2 and into 2 is 75. So the correct answer to this question is 75. Now moving on to the next question. Question 24. We have, if integration of minus a to a, integration of mod of plus mod of x minus 2 dx from minus a to a is equal to 22, where a is greater than 2 and boxes denotes a greater than 3 function, then we have to find the value of integration from a to minus a of x plus boxes dx. Okay, so ये जो function है, this will change behavior from different intervals. ठीक है, तो हम लोग different interval पे इस function को analyze करना है और इसको integrate करना होगा. So we have a greater than 2. So पहला behavior जो यहाँ पे change है, that will be for the x when it is negative. We have our first breakdown as minus a to 0, where x is totally negative. So mod x will give us as minus x, and plus mod of x minus 2 will also give us minus of x minus 2. Okay. Dx.
प्लस नेक्स्ट ब्रेक डाउन इज फ्रॉम 0 to 2. ठीक है, ये 2 पे ये वाला चीज बिफोर 2 ये क्या बोलते इसका बिहेवियर कुछ और होगा और आफ्टर 2 इसका बिहेवियर कुछ और होगा. क्रिटिकल पॉइंट 2 है. ओके, तो वी हैव इट एज यहाँ पे चेंज सेम रहेगी कि पॉजिटिव है तो x will remain as it is x plus and this is negative, so we have minus of x minus 2. Okay, 3x. Then our next breakdown is as from 2 to 8. ठीक है, where both the terms are positive, so it will remain as it is x plus x minus 2 dx, and this is equal to 22 as it is in the question. Now solving it, get this is minus a to a 0 minus 2x plus 2 whole dx plus 0 to 2, it is 2 into dx plus 2 to a 2x minus 2 dx. We have it as इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 टाइम्स x, क्या इंटीग्रेशन होगा क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है, और इसके लिमिट्स है माइनस a to 0, limits of 0 to 2, the limits है 2 to 8. ठीक है, and it is totally equal to 22. We have it a which is a square minus a square plus 2a, and this one is 4 plus this is a square minus a minus. So this is only a square minus 2. It's only equal to 22. 2a and 2 gets cancels and have 2a square is equals to 18, which gives a square as 9 and a as 3. Minus 3 नहीं क्योंकि a is greater than 2. Next, we need to find the value of this integration. Okay, integration of a to minus a x plus cos x dx. अच्छा, now ये छोटा से बड़ा ऐसा कुछ आ रहा है, बड़ा से छोटा है इसका लोअर लिमिट, तो we have a formula to change the limit का मतलब position, which is if we have integration of fx dx where limit is minus, where limit is suppose a to b, we can write it as minus of integration b to a fx dx. लिमिट चेंज करने का माइनस आ जाता है, so we'll do it as it is here, minus of minus a to a x plus box x dx. ठीक है, now जब भी माइनस ए टू ए टाइप का कुछ दिखेगा और अंदर मतलब ऐसा कुछ फंक्शन जो दिखे जो बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, तो वी कैन श्योरली डू अ क्विक चेक फॉर द किंग्स प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट इंटीग्रल्स. तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लाइक अगर कोई भी फंक्शन दिया, लाइक एक एग्जांपल, लेट्स हैव integration of minus a to a fx dx. ठीक है,
इसमें हम लोग का क्या बोलते हैं, अगर एफ एक्स हम लोग का ऑड फंक्शन है तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है इट विल रिजल्ट टू जीरो, ठीक है। इफ एफ एक्स इज इवन, ये वाला जो इंटीग्रेशन है that will result into something like this, integration of 0 2 times integration of 0 to a fx dx, ठीक है। तो हमने खुद चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी ऑर्डर इवन फंक्शन के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक्स और एक तो बॉक्स एक्स वाला। तो ये जो एक्स वाला फंक्शन है दैट इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि यू कैन चेक इट एज हियर, इफ वी टेक up fx is x here, so f of minus x is equals to minus x, which is minus of fx. So this is an odd function. अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाता है और ये बॉक्स एक्स इज नाइदर ऑड नॉट इवन, ठीक है। सो आवर इंटीग्रेशन reduces to integration from minus a to a box x dx, okay। now और a का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, पे a का वैल्यू नोट करते हैं, ठीक है। अब बॉक्स एक्स क्या होता है, बॉक्स एक्स ब्रिटिश इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए मैं तो सॉल्व करने का काफी स्टैंडर्ड से मेथड है, लाइक वी हैव अ नंबर लाइन which is minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3, ठीक है। तो पहले हम लोग का जो फंक्शन एक्स है दैट इज लाइंग -3 to -2, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लिमिट में चेक करते जाएंगे। तो पहले हम लोग का एक्स -3 से -2 में लाइक करेगा, तो बॉक्स एक्स विल गिव अस अ वैल्यू -3, ठीक है। फिर हम लोग का जो फंक्शन है इधर इस पोर्शन पे लाइक करेगा, तो दैट विल गिव अस अ वैल्यू -2। फिर हम लोग का फंक्शन ऐसा कुछ लाइक करेगा, -1 0 2 1 so forth, we will get 1 2, फिर लास्ट में हाँ, तो लास्ट में हम लोग का क्या रहेगा कि जो फंक्शन है दैट विल लाई इन दिस रिदम, तो वो 2 पे जाके लाइक करेगा, ठीक है। तो ये 3 काउंट नहीं, कि मतलब बहुत गलती होती है कि बच्चे क्या बोलते हैं, यही करते हैं कि ये -3 to 3 दिया हुआ तो ये सब सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दो, बट लास्ट वाले जो अपर लिमिट होता है वो ऐड नहीं होता है। तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज -3 to -2 कर रहे पहले, तो -3 to -2 पे बॉक्सेस का वैल्यू क्या अपना -3 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 से -1, यहाँ पे हम लोग का बॉक्स का वैल्यू क्या है -2 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0, इसमें इंटीग्रेशन का वैल्यू है -1 बॉक्स से करते 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 हम लोग को मिलेगा लास्ट वाला ना 2 से 3, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 है 2 dx, and you will solve and you will get it as -1 -3 -2 -1 0 +1 +2, ये cancel, ठीक है। we get it, our answer is 3. The correct answer to this question is question number 3. Now moving on to the next question, question 25. Let P, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मतलब अगर देखने में समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन को नहीं करना बेटर ऑप्शन रहेगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत सी चीजें हैं जो कैलकुलेट करना पड़ेगी और दैट कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम, so it would be a better advice to leave such question and move forward and attempt other questions so that you can score more in the time you save here, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि वी हैव अ मैट्रिक्स P, ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल अल्फा है which belongs to R, और we have another matrix Q, and its element like Q, I, J, something like that is a matrix. It is satisfying this equation PQ equals to K into IQ. K is some scalar, and if we have Q23 as minus K by 8, and the determinant of Q is given K square by 2, then we have to find the value of this. Okay. So first we will we have our equation EQ is equals to K times IQ. Okay. So let's take Q in terms of, so अगर हम लोग both sides प्री मल्टीप्लाई करते P इनवर्स को, क्या P इनवर्स into P times Q is equals to P inverse A times I. ठीक है, K को बाहर भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म लिख सकते हैं K times P inverse I Q. अब we can write this is I, and I into Q is what? Is Q. So Q is equals to K times P inverse IQ. So we have a question Q in terms of, ठीक है, अब Q का मॉड लेते हैं, we know the value of Q. Mod of Q is equals to mod of this whole quantity. ठीक है, and this whole quantity is K times P inverse का mod. IQ का mod is 1. ठीक है, so we have K times P inverse का mod. Mod of Q is equals to, तो K को बाहर निकालते हैं इस determinant से, so we will have P is a matrix of the order 3 into 3, so we are having KQ times mod of P inverse is 1 by mod P. ठीक है, अब our next job is to find the value of determinant of P. So P is 3, 2, 3, minus 1, 0, minus 5, minus 2, alpha, 0. Determinant of mod P is 0 times 0, and this is 5 alpha and 3 alpha. Okay. And this one is 0 minus 3 alpha minus 3 alpha. So this way. Okay. So we have our mod value, which is 20 plus 12 alpha. Okay. अब इसको यहाँ पे हम लोग को डालना, तो इस वाली इक्वेशन में स्पेसिफाई करता हूँ mod q is equals to kq times kq divided by determinant of p. तो mod q को हम लिख सकते हैं k square by 2, and we have kq by 20 plus 12 alpha k square cancels, and we have it. यहाँ से भी प्रूव कैंसिल करें तो we have 10 plus 6 alpha, and from here we have a relation as 10 plus 6 alpha is equals to k. Okay, now
The next thing we have to find another equation to find the value of alpha and k. तो अब हम लोग बस एक तो क्या चीज दिया हुआ है, Q23 का वैल्यू दिया हुआ है, तो Q23 के लिए हम लोग को Q निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे करें, Q हम लोग क्या से निकलेगा, K टाइम्स P इनवर्स I को, तो P इनवर्स को तो I से मल्टीप्लाई करेंगे तो we get it as K P इनवर्स, तो इसको हटा दो बेटा। अब Q is अच्छा P इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा उसके लिए, और K से मल्टीप्लाई भी करना, तो लाइक we have P inverse के लिए adjoint of A adjoint of P divided by P mod of modulus of P, adjoint of P निकालने के लिए we have और हम लोग को इसके लिए अच्छे इससे बढ़िया तरीके से P इनवर्स हम लोग को निकालना है। P इनवर्स में हम लोग को पता है कि हम लोग और हम लोग को Q23 निकालना, ठीक है। जनरली हम लोग को Q में से Q23 निकालना, और Q23 is something of this form। अगर Q कोई मैट्रिक्स है लाइक समथिंग A B C D E F G H I, ठीक है। तो Q23 कौन सा वैल्यू होगी, ये वाला वैल्यू होगी Q23, और ये आकाश में P इनवर्स, ठीक है। तो P इनवर्स जब हम लोग निकालते हैं तब ये वाला जो वैल्यू कहाँ से आता है, जब हम लोग एडजॉइंट वो उसका P को ट्रांसपोज लेते हैं एडजॉइंट का, तब वो बनता है ये, ठीक है। तो जब ट्रांसपोज लेने समय तो यहाँ से यहाँ पे जो वैल्यू होता है दैट कम्स हियर, तो हम लोग को एडजॉइंट ऑफ P में से खाली इस जगह का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो इससे हम लोग को Q23 का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगी कि एडजॉइंट ऑफ P का ये वाला टर्म निकालना है, एंड दैट इज Q23 आफ्टर गेटिंग ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ P इज, एंड वो भी ये वाला इसका इस वाले पार्ट, तो इसको हम लोग लिखते कुछ भी ब्लैंक छोड़ दो, ओके। एडजॉइंट ऑफ P क्या आएगा, इसका अबाउट हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लाइक इस वाले को कैंसिल किए, वी हैव P times alpha plus 4, so this becomes, and इसके लिए नेगेटिव साइन भी आएगा, माइनस ऑफ P alpha माइनस प्लस 4, ठीक है। and this ultimately becomes adjoint of इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हम P इनवर्स में ये वाला Q23 बन जाता है। अब Q is K times P inverse, तो K times P inverse divided by mod P into adjoint of P करेंगे, so this is K by P का मॉड्यूलस we have is 12 alpha plus 20, and that is इसमें ये टर्म आया P इनवर्स में ये कलर जो ट्रांसपोज हो जाता है, दिस वाला टर्म ये रटा में दिखा चला ये प्लस 4, ठीक है। अब we have a Q23 as K times 12 plus 20 को हम लिख सकते 2K, ये कैंसिल हो जाता है, and we have minus of P alpha plus 4, ठीक है। अब Q23 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में,
as minus k by 8. So we have minus k by 8 equals to minus r 3 alpha plus 4. 2 times 2 minus 7 cancels. We have another equation in terms of k and alpha as 12 alpha plus 16 is equals to k. ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो we will get the value of k and alpha. तो यहाँ से हम लोग को k का वैल्यू मिलेगा, solving this and this equation we get k का वैल्यू as 4 and alpha will get it as k का वैल्यू alpha minus 1. ठीक है, so now alpha square plus k square is 16 plus 170. So the answer to this question is 1770. Now moving on to the next question, we have question 26. Let Bi be 3 independent events in a sample space. The probability that only B1 occurs is alpha, only B2 occurs is beta, and only B3 occurs is gamma. Okay? So let P be the probability that none of the events PF occurs, and this 4 probabilities satisfy the equation this and this. All the probabilities are assumed to lie in the interval this, and we have to find the probability of P1 occurring and divided by probability B3 equal. Okay. So let's take the probability of P1 x, probability B2 occurring Py, and probability of B3 occurring with Z. Okay. So probability of only B1, तो उसके लिए क्या होगा, अगर ओनली B1 हो रहा है तो x इंटू B2 नहीं हो रहा है इसलिए 1 माइनस वाई, B3 नहीं हो रहा है तो 1 माइनस z. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा x into 1 minus y into 1 minus z. We have our equation. ठीक है, probability of only B2 occurring similarly 1 minus x times y times 1 minus z, and this is equal to beta. We have it as second equation, and probability of only B3 occurring is 1 minus x into 1 minus y into 1 minus z. Into 1 minus z into z. This is equal to gamma, which is option 3. Question 3. Okay. And we have none of the event occurring. The probability of none is 1 minus x into 1 minus y to 1 minus z is equal to p. We are given this equation. So we need to substitute the value of alpha, beta, gamma, and p in this and solve accordingly. So we have our first equation as alpha minus 2 beta into p times equals to alpha beta. Okay. Have it alpha equal to x into 1 minus y 1 minus z minus 2 times beta given 5 times x into z is equal to 5 by
alpha beta. Alpha beta is xy x minus z का होल स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. इसमें से 1 माइनस जेड एक 1 माइनस जेड ऐसे से. बट अब यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से 1 माइनस जेड कॉमन हो गया है, तो इसको भी यहाँ से डिडक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ x into 1 minus y minus 2 times y into 1 minus x equal to xy. This x minus xy is 2y plus 2xy to xy. Okay, we get from here as x is equal to. Okay, now next equation is beta minus t gamma into t equal to minus 2 beta gamma. Okay. So beta is r this, so 5 times 1 minus x y 1 minus z minus 3 times gamma. Gamma is z times 1 minus x 1 minus y multiplied with p, and p is 1 minus x 1 minus y 1 minus 2 times beta gamma. Beta has y and gamma has z. Y is z 1 minus y into y. ये कैंसिल, यहाँ से 1 माइनस एक्स दोनों जगह से कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल. we are left with y times y minus yz minus 3 times z plus 3yz is equals to minus 2yz. We have it. Just a minute. 3z plus 3yz. Okay. I just checked the question. It has this one is plus. That's what we get. तो ये माइनस 2yz में भी प्लस yz 2yz. ठीक है, माइनस 2yz. तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, y is equals to 3z. ठीक है, we have this expression and we have this expression. यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है, x is equal to 6z and we can rearrange by x by z equal to 6. And what is our x? X is our p of p1 and z is p of p3. We have this value as 6. The correct answer to this question is 6. Now moving on to the next question. Question 27. We have set A. इसमें भी 3 digit नंबर है, सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड है, 100 से लेके 999 तक. ठीक है, और B is the set of
terms of the form set of natural numbers of the form 9k plus 2, which includes like if we put अगर हम लोग k को 11 डालेंगे तो we will have 101 110 ऐसे करते करते it will go on till 992. ठीक है, और C में कुछ टर्म्स है that is of the form 9k plus L. अच्छा सॉरी नहीं यहाँ पे B में हमारा जो टर्म है 9k plus 2 टाइप के टर्म्स which are 11 20 29 so on so forth. तो और इसमें 9k plus L टाइप के टर्म्स है where A belongs to N and L lies between 0 to 9. ठीक है, अब हम लोग को ये इस टाइप का L का वैल्यू निकालना है with the given information as A intersection B union C is this. ठीक है, इधर सम और जितना भी एलिमेंट्स इस सेट में उसका सम ये दिया है, तो उसका यूज करके हम लोग को L का वैल्यू निकालना है. तो फर्स्ट we need to analyze this expression A intersection B union C. अब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं इसमें तो we will have it as A intersection B union A intersection C. ठीक है, अब A intersection B हम लोग क्या हो गया, जितने भी 3 डिजिट टर्म है ऑफ द फॉर्म 9k plus 2. तो 9k plus 2 के 3 डिजिट टर्म कितने हुए, जैसे 101 110 so on till 992. ठीक है, और A इंटरसेक्शन C के लिए हम बस कौन से टर्म्स हो जाएंगे, 9k plus 2 टाइप के 9k plus L टाइप के टर्म्स होंगे बट 3 डिजिट के. तो अगर k को 11 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो we will have all those type of terms. K is 11 so 99 plus L, then we have for 12 it is 108 plus L so on till some number like 990 plus L. ओके, अब इसका जो सम है तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो इसमें जो भी टर्म आएगा इस वाले एक्सप्रेशन में उसमें ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा सेम, इन दोनों का यूनियन होगा, मतलब ये वाले टर्म्स भी और ये वाले टर्म्स भी. तो सम ऑफ A intersection B union C is sum of the terms of A intersection B plus sum of the terms of A intersection C. ठीक है, और हम लोग को इसका वैल्यू पता है which is 274 into 400, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग AP. फर्स्ट टर्म इज इसमें पहले कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ये पता लगा, तो ये k इक्वल्स टू 11 के लिए आता है और एक k इक्वल्स टू 110 के लिए आता है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 110 माइनस 11 विच इज 19 प्लस 1 विच इज 100. अगर दोनों इंक्लूडेड है तो हम लोग को यहाँ प्लस 1 करना पड़ेगा. तो 100/2 इंटू A प्लस है, A क्या होता है, A इज 101 और L हम लोग लास्ट टर्म होता है AP सीरीज में 992. ठीक है, प्लस S A इंटरसेक्शन C हम लोग इसका सम नहीं निकाल सकते, और निकाल भी सकते हैं तो we can write it as this is also same k equals to 11 and k equals to 110. So this is also 100/2 99 plus L and plus 990 plus L. ओके, अब हम लोग क्या आया, ये 993 और 1093 और 274 into 4 कितना होता है, like we can also directly do that. 100 कॉमन निकाल के यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दिए और 274 into 4 is 16 1 is 28 29 8 1096. ठीक है, और इसको 1093 यहाँ पे हाफ कॉमन ले लेते पूरा सबसे, we get 99 plus 990 is 999 और
1089 प्लस एल 2l। अब 2 को उधर भेजते हैं तो वी गेट इट एज 2192 2192 is equal to 1093 plus 89 is 1089 is 2182 प्लस 12। अब नेक्स्ट तो इसको इधर लेके आते तो हम लोग 10 बचेगा और 2l इज इक्वल टू 10 और l इज इक्वल टू 5। यहाँ से हम लोग l का वैल्यू मिल जाता है 5। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 लिमिट अ क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, सब और समेशन का भी क्वेश्चन, सीरीज का भी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इस वाले टर्म को एनालाइज करते हैं। tan इनवर्स 1 by 1 plus r square। ठीक है, ये वाला जो टर्म है लोग इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, लाइक जितने भी tan के टर्म tan इनवर्स के टर्म्स होते थे हम लोग का सीरीज में कोई भी tan इनवर्स से सीरीज होता था उसका हम लोग का जनरल मेथड क्या होता सॉल्व करने का कि लाइक इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे, लाइक इसको नीचे वाले टर्म को देखेंगे, इसको 1 प्लस यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो r प्लस 1 आएगा। और ये कुछ हम लोग को देखा था टर्म लग रहा है, जैसे tan थीटा का tan a प्लस बी का फॉर्मूला में या a माइनस बी का फॉर्मूला में ऐसे कुछ टर्म आ रहा है 1 प्लस x इंटू वाई टाइप का टर्म्स। ठीक है, तो वही उससे हम लोग को हिंट लेके ये कंप्लीट करना है। इस लाइक 1 को लिख सकते हैं r प्लस 1 माइनस r डिवाइडेड बाई 1 प्लस r इंटू r प्लस 1। तो इससे हम लोग क्या मिला, इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r। तो इसका ब्रेकडाउन हो गया अपना। अब हम लोग समेशन में डालते हैं, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है इसको ओपन करते हैं। तो फॉर r इक्वल टू 1 दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस फॉर r इक्वल टू 2 दिस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स 3। ऐसे करते 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 और लास्ट में tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। तो हम लोग ये देखेंगे tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 कैंसिल हो रहा है, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 कैंसिल हो रहा है, tan इनवर्स 4 भी यहाँ बीच में कहीं कैंसिल हो जाएगा और लास्ट वाला टर्म ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है हर जगह ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने किस एंड में क्या बचेगा, tan इनवर्स n प्लस 1 minus tan inverse 1 और tan inverse 1 we know is pi by 4 tan inverse n plus 1 in minus pi by 4। अब ये वाला टर्म भी हम लोग का tan के अंदर है तो इसको tan के अंदर डालते हैं, tan of tan inverse n plus 1 minus pi by 4 tan of a minus b वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या है tan of tan inverse n plus 1 minus tan pi by 4 divided by 1 plus tan pi by 4 into tan of tan inverse n plus 1। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज n plus 1 और ये tan pi by 4 is minus 1, tan pi by 4 is 1 so minus तो minus 1 तो ये कैंसिल और नीचे में क्या था 1 plus tan pi by 4 is 1 और ये n plus 2 n plus 1। So we have it as n by n plus 2।
थोड़ा साइड में काम करते हैं। ठीक है, सब कर लेता हूँ। Limit of this n tending to infinity, ये वाला term is n by n plus 2. तो इसको n से डिवाइड करें पूरा टर्म को, ये हो जाएगा 1 by 1 plus 2 by n, और इन्फिनिटी अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी को n में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाला टर्म 0 हो गया, and we have our answer as 1. The answer to this question is 1. So moving on to the next question, question 29. हम लोग को let M be any 3x3 matrix with entries from the set 0, 1, 2. So maximum number of such matrices find करना, for which sum of diagonal elements of this is 7. M transpose into M is 7. ठीक है, तो कोई भी जनरल मैट्रिक्स M ले लेते हैं, A B C D E F G H I. ठीक है, अब इसका M ट्रांसपोज क्या होगा, A B C, ये टर्म ऐसे ट्रांसपोज मतलब वो हो जाएगा, और ये D E F, rows become column, column become row, D E F G H I. M transpose M. This is A B C D E F G H I into A B C D E F G H I. अब हम लोग को इसमें भी ये जो मल्टीप्लिकेशन करना, उसमें भी हम लोग को डायगोनल एलिमेंट से खाली वर्क काम करना, उसका ही सब निकाला, तो हम लोग से डायगोनल एलिमेंट से खाली फाइंड आउट करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट इसका होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, ये वाला टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई करना, तो वी हैव इट एज a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले टर्म के लिए, नीचे वाले टर्म के लिए वी हैव इट एज बीच वाला ना, तो उसके लिए हम लोग ये वाला लेंगे BEH into BEH, we have b square plus e square plus h square. Now ये वाला टर्म निकालना है, के लिए CFI into CFI, यहाँ से c स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस i स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो हम लोग का बहुत टाइम सेव होता है, नहीं तो पूरा मैट्रिक्स निकालते बैठेंगे तो टाइम मतलब बहुत यूज हो जाएगा। और इसका सम निकालना हम लोग को, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस h स्क्वायर स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस i स्क्वायर। तो सारे के सारे जितने भी टर्म्स है हम लोग का सबका स्क्वायर हो गया, तो एडिशन। अब ऐसा हम लोग को बोला है कि इसमें जो भी इसका जो सम है डेट इज 7, और जितना भी एलिमेंट्स है a b c d e f g h है, यहाँ पे सब के सब कौन से सेट को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू दिस 0, 0, 1, 2। ठीक है, ये लोग इस सेट को बिलोंग करते हैं, जितने a से लेके सबसे लेता हूँ a b c till f till h, I. This belongs to the set 0, 1, 2। हम लोग के अंदर खाली ये एंट्रीज पॉसिबल है, तो ऐसा कौन से वैल्यूज के लिए ये वाला चीज पॉसिबल हो सकता है। तो वी हैव डिफरेंट केसेस, केस 1 व्हेन वी हैव और वी हैव 9 out of 7 or 7 out of 9 of them to be 1, so this is 7 ones and 2 zeros। ठीक है, और केस 2 इज अगर हम लोग एक तो पहले 2 को बिठाते हैं तो 2 स्क्वायर इज 4, अगर दूसरा भी 2 बिठाएंगे तो वी विल हैव 4 + 4 8, तो 8 तो पॉसिबल नहीं, तो एक ही 2 का वैल्यू बैठ सकता है, तो 1 × 2
कॉमा 1 कितना और बैठ सकता है, अगर ये 2 है तो ये फोर्थ प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया, अपने बचा 3 प्लेस और, तो 1 से ऑक्यूपाई करेंगे तो 3 टाइम्स 1 एंड बचे कितने 5 प्लेसेस फॉर जीरोस, 5 जीरोस। ठीक है, अब इस केस को कितना पॉसिबिलिटीज है, 9 में से कोई भी 7 1 हो सकता है, तो वी हैव 9C7 पॉसिबिलिटीज का, तो 9C7 कैन आल्सो बी 9C2 और इसका वैल्यू है 98/2 which is 4 into 9 36। और नेक्स्ट के लिए केस में एक बार 2 को बिठाना है, तो 9 में से एक बार 2 के लिए 9C1 बचे 8 प्लेसेस में we have to find 3 places for ones, so into 8C3 बाकी बचे 5 0 रहेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 into 8 factorial, sorry factorial 8 into 7 into 6 divided by 3 factorial, which is 3 into 2 into 6, 6 cancel, so we have 9 into 8 72, 72 into 7 which is 504. The total number of cases possible is total is here 504 plus 36, which is 540. The answer to this question is 540. Moving on to the next question, question 30, which is the last question of this paper. If the least and the largest values of alpha for which the equation this has a solution are p and q respectively, then 4 times p square plus q square is equal. तो इस इक्वेशन में से हम लोग अल्फा का लीस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। पहले इक्वेशन को लिखते हैं, z plus alpha times z mod z minus 1 plus 2i is equal to 0। ठीक है, तो z को हम लोग लिख सकते हैं x plus i by, तो इसी बता देते लाइक जब भी मतलब हमारे पास एक मॉड वाला साइन है मोस्टली इसमें x plus i by वाला जो सब्स्टिट्यूशन है z का दैट वर्क्स आउट एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना क्वेश्चन सॉल्व करने के समय में बहुत इफेक्टिव होती है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को, x plus i by plus alpha times mod of x minus 1 plus i by plus 2i is equal to 0। इक्वेशन अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x और मॉड का मतलब इसका तो उसका मॉड्यूलस वैल्यू इसका मिल जाएगा, दैट इज x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि i y कॉम्प्लेक्स वाला जो टर्म आयोटा वाला उसको एक से मिला देंगे, which is y plus 2 times iota, this is equal to 0। अब हम लोग के x plus i by times का क्वेश्चन फॉर्म बन गया ये एक दूसरा, और इसमें रियल टर्म इक्वल टू 0 एंड कॉम्प्लेक्स टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग का, तो वी गेट इट एज पहले y plus 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस अल्फा टाइम्स रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 0। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू -2 आएगा, अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे साथ में और एक अल्फा वाला टर्म उधर भेज देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा टाइम्स, तो खोल देते हैं x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर इज 4। ठीक है, और अब पूरे इक्वेशन को हम लोग वहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, we get it as x square is equal to alpha square times x square minus 2x plus 5। ठीक है, अब x square को इधर सब्स्टिट्यूट करें तो we have x square into alpha square minus 1 minus
2 अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हम लोग का जो इक्वेशन बना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वी नो, क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग का z है दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें से जो ये x वाला टर्म है दिस इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में हम लोग को पता है कि x बिलोंग्स टू रियल। तो जब x रियल बिलोंग करता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक में, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, व्हिच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और b स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर की पावर 2 टाइम्स 2 अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, which is 4 alpha to the power 4 minus 4ac. 4 times a is alpha square minus 1 and c is 5 alpha square. This is greater than equal to 0. इससे क्या मिलेगा हम लोग को 4 alpha to the power 4 minus 20 alpha 4 plus 20 alpha square. Greater than equal to 0. इससे क्या है 20 alpha square minus 16 alpha to the power 4 greater than equal to 0। यहाँ से alpha square कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, alpha square into 20 minus 16 alpha square, so this will give us अच्छा इसको वेवी कम करना पड़ेगा। तो वेवी कम के हिसाब से एक तो हम लोग के पास 0 आएगा और एक तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, दिस इज 20 by 16 which is 5 by 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये नेगेटिव है, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू का नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इनटू ये नेगेटिव पॉजिटिव है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और अगर अल्फा स्क्वायर इज पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आएगा इसके बीच में, और इधर में नेगेटिव चल जाएगा, तो ये 5/4 से बड़ा तो ये नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो वी हैव पहले बात अल्फा स्क्वायर हम लोग को नेगेटिव जाएगी, तो वी हैव अल्फा स्क्वायर बिलोंगिंग टू 0 से 5/4। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इज अ रियल नंबर तो ये नेगेटिव होगा, तो वी हैव फ्रॉम हियर अल्फा lying between minus of root over 5/2 to root over 5/2। और हम लोग को ये बोला कि अल्फा का लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, p is the least value which is minus root 5/2 और q is the maximum value which is root 5/2। so we have a p square plus q square is equals to 5/4, sorry we have to find the value 4 into p square plus q square, so this is 4 times 5/4 plus 5/4 which is 5/2 into 4 which is 10। so here we come to the end of this paper, answer of this value is 10। so here the paper is completed। तो हम लोग को इससे मालूम पड़ा कि इसमें पेपर्स में क्वेश्चंस थोड़े मतलब स्टैंडर्ड से थे, न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चंस थोड़े टफ थे और एमसीक्यू वाले पोर्शन में थोड़े इजी थे, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप में अगर क्वेश्चन हम लोग अच्छा छाटते तो मे बी मतलब इसमें 5 स्कोर करना पॉसिबल था। लाइक इसमें मैंने बताया था कौन सा एक क्वेश्चन था जिसको देख के मतलब जल्दी से कोई प्लीजिंग लगे कि सॉल्व करने के लिए, तो इसको छोड़ने बेटर होता है यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे जजमेंट करके हम लोग आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।